Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, you all. Okay. In last lecture, we discussed algorithm, and then after that, we had seen the characteristics of an algorithm: input, output, effectiveness, definiteness, and finiteness. Means, if you want to find the solution to the problem, then we have to write steps for that. That is nothing but algorithm, and that steps must be finite. Means if you want to write any application or if you want to write any program, then first we have to think on that program. That means we have to apply your logic, and whatever logic you have, we have to write that logic into the steps. That is nothing but algorithm. मतलब जो हमें प्रॉब्लम है हमारा, if you want to find solution to that problem, then we have to write step by step solution. That is nothing but algorithm. Then after that, we had seen a lot of characteristics of an algorithm. In that first, we had seen input, zero or more data you can give as an input to the algorithm. मतलब हमने input नहीं दिया तो भी चलता है, because a lot of algorithms are there, they haven't any input. But what is the requirement? Each and every algorithm should generate at least one result. मतलब हर एक algorithm ने कम से कम एक result तो generate करना चाहिए. Okay, that is our requirement. Because you are writing algorithm for what? For finding the solution. That means each and every algorithm should generate at least one result. And then after that, we had seen finiteness. Finiteness means number of steps in an algorithm must be finite. We cannot write algorithm in such a way. It contains suppose a lot of steps. Still, we are not getting solution. We are not expecting algorithm like that. In an algorithm, steps must be finite. Definiteness means each and every step in an algorithm must be well defined, must be clear. Means whatever you want to write, it must be clear. Means if you want to calculate area of circle, then you have to mention like this: calculate the area of circle. Don't mention like this: calculate area of shape. Shape means there are different types of shapes with triangle, rectangle, circle. Different types of shapes are there. Means what? If you want to calculate area of circle shape, then you have to mention like this. That means everything in an algorithm must be clear. And then last one is effectiveness. What is the meaning of effectiveness? Means whatever you want to write in an algorithm, it must be effective. It must be well drawn. Okay, that are these are the characteristics of an algorithm. Now we have to see the most important part of an algorithm, that is space complexity and time complexity. Sorry, space complexity and time complexity. Actually, in an examination, one question might be asked on this. See, what is that question? That question will be, when we can say performance of an algorithm is high. हम कब बोल सकते हैं कि algorithm का performance या program का performance high है या सबसे अच्छा है? When we can say it? See, the answer for that question is very simple. If an algorithm or if the program requires less memory space and less time for its execution, then we can say the performance of that program or performance of that algorithm is high. कौन सा भी प्रोग्राम है, कौन सा भी algorithm है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा कब रहता है? जब उसको कम से कम मेमोरी स्पेस चाहिए उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए, और कम से कम टाइम में सपोज वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, देन वी कैन से
the performance of that algorithm or the performance of that program is very high. And that we have to see in this, in space complexity and in time complexity. First, we have to see how to calculate space complexity. Then we have to see how to calculate time complexity. And after that, how to measure the performance of an algorithm or how to measure the performance of a program. That we have to see. Okay. So let us start with joining. Okay, let us start with space complexity and the performance of an algorithm. Mm, Let us start with performance of an algorithm. See, an algorithm which requires less memory space and less time for its execution, then the performance of that algorithm or the performance of that program is very high. Okay, that we have to see. Listen what I'm saying. When we can say the performance of an algorithm is very high, if it requires less time and less memory space for its execution, then the performance of that algorithm or the performance of that program is very high. Is it clear to all? हेलो, ये क्लियर हो गया कि एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस अच्छा कब रहता है? जब उसको कम टाइम एंड कम मेमोरी स्पेस चाहिए उसके एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है? हाई रहता है. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay. Now what we have to see? We have to see space complexity. Okay. Space complexity. Space complexity of an algorithm, like that we have to represent it. आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. जो पी रहता है वो उसके बेस में रहता है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम. See what is the definition of space complexity and how to calculate it. Total space required. See what is the definition of space complexity. Total space required to the program or total space required to the algorithm for its execution. For its execution, that is called space complexity. Total amount of space. See what I'm saying? Total amount of space required by an algorithm or required by an application for its execution, that is nothing but space complexity. उस प्रोग्राम को उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितनी स्पेस चाहिए, that space is nothing but that space is nothing but space complexity. Total amount of space required to the algorithm for its execution, that is nothing but space complexity. Is it clear to all? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, write down definition first. पहले definition लिखो. Space complexity. Total amount of space required to the program. Space means memory space. Memory space. Total amount of memory space required to the program for its execution. For its execution is called space complexity. It's called space complexity. Total amount of space required to the program for its execution
for its execution, that memory space is nothing but space complexity. It can be represented by, it can be represented by S of P. P means program, S stands for space. Okay. Then see student how to calculate space, which is required to the algorithm for its execution. So see what I'm doing here. Suppose in an application, if you declare the variables like this, int a comma, if a comma b like this. If you declare the variables in your application, then for each declare variables, total 1 byte space require. That we have to count in this way. मीन्स हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी, 1 मेमोरी, ऐसे आपको कंसिडर करना है. प्लस सेकंड जो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किया है और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, देन उस वेरिएबल के लिए भी 1 मेमोरी. मतलब जितने सारे वेरिएबल्स आप हमारे प्रोग्राम में या एल्गोरिदम में डिक्लेयर करोगे, हर एक प्रोग्राम के लिए 1 मेमोरी लगती है. If you declare variable a, then it takes 1 memory. Actually there is no unit to that, but we can say in byte, 1 byte memory. Then again one more variable I have declared here, then again it takes 1 memory. 1 plus 1, it becomes 2 memory, like this. If you declare array like this, a of 10, a of 10, in this way if you declare array, then it takes 10 memory, means like this, plus 10, then total memory required to this algorithm is 12, like this. जितने वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे हर एक वेरिएबल के लिए यह क्या रहता है, 1 बाइट मेमोरी मतलब रिक्वायर है. तो इफ यू डिक्लेयर 1 वेरिएबल, देन इट टेक्स 1 मेमोरी. For second variable, again 1 byte memory, and the size of that array is 10. That means it takes 10 bytes memory, like this. In this way we have to count it. Okay. तो इसमें वेरिएबल के लिए भी है या स्पेस के लिए भी अलग अलग कैलकुलेशन रहता है. मैं आपको दिखा रहा हूँ. Here I am writing one application. Then here I am declaring variables a comma b, comma suppose a of n, लिखता हूँ 10. Then again int x, y, z. And then for equal to 0, b less than equal to 9, a plus plus. And then here printf, enter the number, and then scanf, send the ampersand a of I, a of a, like this. Okay, then tell me total space required to this algorithm. इसके लिए कितना total space require है, इसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए. हेलो, हेलो, 22 सर. कितनी, 22. 22. ठीक है. अजून कोण, 11. 11. अजून 40. 40. अजून 10. 10. अजून
12. 12. 12 अजून अजून बोलत राहा. टोटल स्पेस रिक्वायर्ड टू दिस अल्गोरिथम इज 12. 12 1 2. मैंने बोला ना आपको एक वेरिएबल के लिए 1, इसके लिए 1, और या डबल एरे है तो एरे की साइज कितनी है 10. सॉरी 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 1 2 1 2 एंड 10 12 देन 13 एंड 14. एक्चुअली ये नहीं आएगा इसमें. तो कितना स्पेस रहेगी इसके लिए? 14. 14. ओके, राइट राइट एग्जांपल. पहले डेफिनेशन लिखो. डेफिनेशन आपने लिखी है. देन लिखो फॉर एग्जांपल एंड राइट डाउन दिस एंड राइट इट्स आंसर दैट इज 14 बाइट्स. एक्चुअली काउंट नहीं रहता है, यूनिट नहीं रहता है, लेकिन हम बोलेंगे बाइट्स. Done, sir. Okay. Okay, now next. Int I comma n comma star p then printf how many, then scanf percent d ampersand n, then p equal to ज्यादा हो जाएगा. ठीक, p equal to int star malloc size of n into int of n into size of int then tell me total space required to this algorithm. Sorry, 2 3 3. Okay. Anything else? 2. 2. Anything else?
plus n. Yes, very good. Who is telling? Sir, कैसा लॉजिक लगा है? oh, we are asking for n numbers, right? And we have 3 variables, so n plus Yes. देखो क्या है यहाँ. Actually इसने लॉजिक लगा है. How many variables are in this? 3 variables. Okay. So the space required to the 3 variables is 3. ये तो हमारा फिक्स है. अरे कहाँ गया? ये तो हमारा फिक्स है. But here actually one statement I have written in this: p equal to n star malloc size of n into size of int. एक्चुअली हमने कौन से भी एरे को, सपोज हम कौन से भी वेरिएबल को पहले मेमोरी एलोकेट करते हैं रन टाइम में, तो वो एरे बन जाता है. लेकिन यहाँ जो p वेरिएबल है जिसको हम एरे बना रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो साइज है, वो साइज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. वो साइज हमें मालूम नहीं है. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n. Okay, the value it completely depends on, मतलब size of p, size of array p is completely depends on the value of n. तो इसको बोला जाता है variable size space. उसको क्या बोला जाता है? variable size space. ये जो variable हम डिक्लेयर करते हैं ना, उनको बोला जाता है fixed size memory space. What we can say to them? Fixed size memory. Okay ना? Fixed memory space. Fixed size memory space. Because if you declare them, then immediately one byte memory will be allocated to them. Okay, तो उनको क्या बोला, उनको कौन से कैटेगरी में डाला जाता है? फिक्स साइज में. बट हियर इफ यू वांट द साइज ऑफ एरे p, हमने किसी ने बोला कि बाबा p एरे की साइज कितनी है? nobody knows, because the size of array p is completely depends on the value of n. हम बोलते हैं ना how many means, how many means user can enter 3, user can enter 5, user can enter 10, 20, कितने भी user enter कर सकता है. That means the value of n is not fixed in a program. बराबर. And because of that the size of p is also not fixed. It completely depends on the value of n. It completely depends on the value of n. So the size of p, that means size of p array is comes in variable size space. तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 3 plus n means what? n plus 3. हम ऐसे लिखते हैं. हो गया n plus 3, मतलब वो एक्सप्रेशन 3 plus n and n plus 3 सेम रहता है. Any problem in this? समझ में आ रहा है? What is the n variable size space and what is the 3 fixed size space? Is it clear? या p array जो है ना, उसकी साइज किसके ऊपर डिपेंड है? उसकी साइज n के ऊपर डिपेंड है. बराबर. ये डायनामिक का कॉन्सेप्ट है. द साइज ऑफ array p is completely depends on value of n. Okay, value of n. So that comes in variable size space. So इसके जगह डायरेक्टली n लिखा जाता है. और जितने सारे वेरिएबल्स है उसके लिए क्या लिखा जाता है? फिक्स साइज, दैट इज 3. एनी प्रॉब्लम? हेलो, याद रखना है आपको है. हेलो. No, sir. ओके, लिखो वहाँ एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो. The size of array p is completely depends on the value of n, so it comes in variable size memory space. So the total space required to this algorithm for its execution is n plus 3. आपको सिंपल से ही क्वेश्चंस रहेंगे इसके ऊपर. जैसे एक एग्जांपल दिया जाएगा या 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा. व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट इट.
total amount of space required to the algorithm for its execution, that is nothing but space complexity. It can be calculated as tick size space plus variable size memory space. If you declare the variables in an algorithm or in an application, then all that comes in tick size memory space. And if you are accepting the values, or if you are accepting the values, or if you are accepting size to the array at runtime, then it comes in वेरिएबल साइज मेमोरी स्पेस. वेरिएबल साइज का इतना ही रहता है. और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ये आपने लिखा है ना, इसके बाद मैं आपको एक देता हूँ. इज इट डन? ये हो गया आपका? Yes, sir. ओके. सेम हो गई. ठीक है. बोलो. दिस इज algorithm. This is program. Space complexity, time complexity. हेलो. Anyone? Hello. 7. 7. 1 plus 5 6. Yes, 7. It's static. It's fixed. It is not in variable size because we have initialized array. Array हमने initialize किया. In how many elements are in that array? 5 elements are there. That means size will be 5. Then n, 5 plus 1 6. And in this function, one more variable I have declared, that is I. So 5 plus 1 it becomes 7. अरे आपको क्या याद रखना है? सिर्फ वेरिएबल कितने डिक्लेयर किए ना उतना ही देखना है, कुछ नहीं देखना बाकी का. इट्स वेरी सिंपल. एरे आपको तो मालूम है ना कि एरे को ऐसे हमने 5 साइज का एरे हमने डिक्लेयर किया. देन वी कैन स्टोर 5 वैल्यूज इन दैट. दैट मीन्स हर एक ब्लॉक में हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं, तो एक वेरिएबल हो जाता है, तो उसको 1 कंसीडर करेंगे हर एक ब्लॉक को. इफ देयर आर 5 ब्लॉक्स इन दैट एरे, देन साइज विल बी 5, लाइक दैट.
Write down that example and write size space, that is 7. Done, sir. Okay. Now give heading small heading time complexity. इसमें डिफिकल्ट भी बहुत सारे एग्जांपल से मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा ऑनलाइन में. इट्स वेरी सिंपल, स्मॉल स्मॉल एग्जांपल लेने के लिए बोला है. Then also in tomorrow's lecture I will take more difficult examples on this also. So first give heading time complexity. Same definition is there. Total amount of time required to the algorithm for its execution, that is nothing but time complexity. Total amount of time required to the algorithm or program for its execution, that is nothing but time complexity. उस algorithm को execute होने के लिए जितना सारा time चाहिए लगेगा, that time is nothing but time complexity of that algorithm. Sir, definition repeat करा ना. Okay. Total amount of time required to the algorithm for its execution is called time complexity. It can be represented like this: T of P, T of O. T of P, time complexity of a program, time complexity of an algorithm. Then I'm writing one example here. Wide main. It's very simple. Int A comma B, int C, and then print app hello data structure. Now there was hello. And then see how to calculate time complexity of an algorithm. Definition is total amount of time taken by the algorithm for its execution, that is nothing but time complexity. It can be calculated as suppose in this algorithm there are 3 statements. So for the execution of first statement it takes 1 time. 1 ही लिखना है हमें फिक्स के लिए. 1 मतलब इसको एग्जीक्यूट होने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए? 1 टाइम. आपको ऐसे बोलना है 1 टाइम. Then again one more statement is there. For the execution of that statement again 1 time we need, and again for this execution of this statement again 1 time we need. So total space required to the total time required to the for the execution of that algorithm is 3. कितने स्टेटमेंट है उसमें? 3 स्टेटमेंट है और हर एक स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होने वाला है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 टाइम ऐसे बोलने का. इज इट क्लियर? वेरी सिंपल. तो पहले डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल लिखो और ये भी लिखो. आउटपुट इज 3.
तो बोलोगे इतना सिंपल है, ये क्यों लिया है? और एक लेता हूँ ना, is it done? Yes, sir. One more I am writing. Int I n printf enter value for n scanf snd ampersand n r I equal to 0, I less than n, I plus plus, and then printf snd I. Tell me time, total time required for the execution of that algorithm. n plus 5. N plus 5. His answer is n plus 5. I am writing here, but all of you have to trace. हर एक को देखना है. Enter the value for n, scanf percent d ampersand n. N is a variable. Okay, to that variable we are accepting a value. So it comes in variable space, variable time. वो कौन से कैटेगरी में जाएगा? वेरिएबल टाइम में. जैसे स्पेस के लिए वैसे ही वेरिएबल के लिए जाएगा n, because the value of n is not fixed. तो n तो आएगा इसमें. n की वैल्यू है, it completely depends on user, it is not a fix. So n वेरिएबल में जाएगा तो n फिक्स रहेगा n. देन उसने बोला इसके बाद 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है उसने. तो बाकी लोगों को क्या लगता है? थिंक ऑन इट. सॉरी, n प्लस n+5. हाँ, n+5 लिखा है मैंने. और किसी को इसके अलावा और कौन सा लगता है? n+5 के अलावा? No, sir. नो, नहीं लगता है. ठीक है, एक मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, जैसे कि दिस इट टेक्स वन स्टेटमेंट वन टाइम, देन ए भी लेगा वन टाइम, नो प्रॉब्लम. ये भी लेगा वन टाइम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. अभी मेरा फॉर लूप है. माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स दैट फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. कितने बार एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप? सपोज n, हाँ ओके, n की वैल्यू सपोज 5 है. हम n की वैल्यू क्या कंसीडर कर रहे हैं? 5. तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 5 times. 5 टाइम्स होगा या 6 टाइम होगा? 5 times. 5 टाइम्स. देखो आई की वैल्यू 0, हाँ 0 से आई की वैल्यू 0 है, एक बार होगा. 6. यस, आई की वैल्यू 1 है, एक बार होगा. हाँ यस यस. आई की वैल्यू 2 है और एक बार होगा. आई की वैल्यू 3 है तो भी होगा. आई की वैल्यू 4 है तो भी होगा. और आई की वैल्यू 5 है तो 5 लेस देन 5 एग्जीक्यूट तो होगा ना. कंडीशन फॉल्स होगी लेकिन एग्जीक्यूट होगा. तो मींस n की वैल्यू, वी आर कंसीडरिंग द वैल्यू फॉर n, we are considering the value for n is 5, then it will be executed 6 times. If you consider the value for n is 4,
then it will be that for loop will be executed 5 times, 4 times ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए, ऐसे एग्जीक्यूट हो जाता है. ओके, if you consider the value for n is 10, कौन सी वैल्यू कंसीडर की हमने n के लिए 10 वैल्यू, then how many times it will be executed? 11. is it okay? If the value of n is n की वैल्यू n ही कंसीडर कर रहे हैं, then how many times it will be executed? n की वैल्यू n है, n की वैल्यू 10 है तो 11 टाइम्स, n की वैल्यू 5 है तो 6 टाइम्स, n की वैल्यू 4 है तो 5 टाइम्स. अब n की वैल्यू n है तो कितने टाइम्स? 1 time. n प्लस 1, मतलब n होगा और प्लस क्या होगा? 1. मतलब n की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 1 6, ऐसे हम बोल रहे थे. n की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 1 11, ऐसे हम बोल रहे थे. n की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 1 हम 5 बोल रहे थे. इफ द वैल्यू ऑफ n इज n, then how many times it will be executed? n plus 1. Is it clear to all? Is it clear to? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा n plus 1. ओके, अब ये n plus 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? ये प्रिंटफ स्टेटमेंट, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5 तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 6 and 5. कितने बार? ये 5 टाइम्स ही होगा. आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? यहाँ 0, आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 4 होगी. मतलब ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 5 टाइम्स, राइट? ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 5 टाइम्स. मींस इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड 5 टाइम्स. इफ द वैल्यू ऑफ n इज 10, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड 10 टाइम्स. अब हमारी n की वैल्यू n है तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? इट विल बी एग्जीक्यूटेड, बोलो, इट विल बी एग्जीक्यूटेड n टाइम. will be executed n टाइम, बिकॉज क्या n की वैल्यू 5 है तो 5 बार होता है, n की वैल्यू 10 है तो 10 टाइम्स होगा, n की वैल्यू n है तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? n टाइम्स. कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? n टाइम्स. इज इट क्लियर टू ऑल? सगळ्यांना समजलंय? No, sir. Repeat once again. यस, आई एम रिपीटिंग. देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये तो आप ऐसे ही लिख सकते हो. ये तो आपको समझना चाहिए कि बाबा हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी एग्जीक्यूटेड. इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5, देन हम लिखते हैं 5 प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा. बराबर? 5 किसके लिए? 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए भी होगा. 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा. मतलब ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 5 प्लस 1 टाइम. इफ द वैल्यू ऑफ n इज 10 तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? ये 11 टाइम एग्जीक्यूट होगा. बिकॉज जब तक उसकी वैल्यू ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है. तो 10 प्लस कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 10 प्लस 1. तो हम क्या यहाँ क्या कंसिडर करते हैं? n इज अ वेरिएबल, n तो वेरिएबल है तो n की वैल्यू n है तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? n प्लस 1 टाइम. बराबर? और यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ आपने इसका किसी ने आपको पूछा ना, देन व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो आप बोलोगे ना इसका आउटपुट आएगा n की वैल्यू सपोज 5 है तो इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4. मतलब कितने वैल्यू बोलोगे आप? 5 वैल्यू बोलोगे. 0 1 2 3 4 मतलब कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है? ये 5 टाइम्स. कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है? 5 टाइम्स. कब? जब n की वैल्यू 5 है. जब n की वैल्यू 6 रहेगी तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 6 टाइम्स. n की वैल्यू 7 है, कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 7 टाइम्स. तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ आपको? वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की लैंग्वेज में, एल्गोरिथम की लैंग्वेज में, इफ द वैल्यू ऑफ n इज n, मतलब जितनी n की वैल्यू उतनी बार वो एग्जीक्यूट हो रहा है. तो वैल्यू ऑफ n इज n तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? n टाइम्स. लाइक दिस. एनी प्रॉब्लम? हेलो? हेलो? Yes, sir. मतलब का? Are you No, getting? sir. Are you getting or not? Then उसके बाद उसकी एडिशन करनी है. n plus 1 प्लस ये ऊपर का 3, फिर आएगा ये आएगा 2n प्लस 4, आएगा 2n प्लस 4, ऐसे से एक मिनट निकल. और इसके बाद ये आएगा 2 इन ब्रैकेट n प्लस 2. ये होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. कितना सिंपल है. हाँ बोलो, एनी डाउट? आउटपुट नहीं सर अभी. हाँ बोलना निखिल. सर ये आउटपुट आएगा n प्लस 1. हाँ यही ना, ये वाला.
और क्या आएगा 2n+4 आएगा, और फिर हमने 2 को बाहर बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या आता है n+2 ऐसे लाइक दिस। एनी प्रॉब्लम? एनी ऐसे लिखा तो भी चलता है, लेकिन अब थोड़ा मैथमेटिक्स आपने सीखा भी है तो थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। फर्स्ट राइट डाउन दैट एग्जांपल। अरे बहुत सिंपल है, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी छोड़ दो, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अपना उसको ट्रेस करो, ये जो प्रोग्राम है ना उसको ट्रेस करो आप जब ट्रेस करने के बाद आपको पता चलेगा क्या रहता है। आपको ये तो फिक्स है ना कि एन की वैल्यू सपोज 5 है, द वैल्यू ऑफ एन इज 5। ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप? ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 6 टाइम्स। 6 टाइम, बराबर ना। एन की वैल्यू 5 है तो हम कैसे लिखते हैं, ये होगा उसका एग्जीक्यूशन होगा 5+1, और ये हमारा 5 क्या है, ये 5 हमारा एन है, ये 5 हमारा क्या है एन है, एन की वैल्यू ना 5। देखो ये लिखा है हमने, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारी 5 है, तो ये कैसे लिखेंगे हम 5+1। सपोज एन की वैल्यू 10 है तो हम कैसे लिखेंगे, कितने बार एग्जीक्यूट हो गए 10+1 11 टाइम्स। 11 टाइम्स, मतलब हम क्या लिखेंगे 10+1। व्हाट इज 10? 10 इज द वैल्यू ऑफ एन, 10 इज द वैल्यू ऑफ एन। या सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, या सिर्फ 10 की जगह मैं एन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाता है n+1। और सपोज ये एन की वैल्यू 5 है, बराबर, एन की वैल्यू 5 है तो ये 6 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, ये 5 टाइम्स ही होगा, बराबर ना। ये कंडीशन फेल हो जाएगी तभी अंदर नहीं आता है। एन की वैल्यू 5 है, क्या होगा देखो, आई की वैल्यू 0 है, एग्जीक्यूट होगा बिकॉज 0 लेस देन 5, यस। आई की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन 5, यस। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 5, यस। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 5, यस। आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 5, यस। तो 5 टाइम्स हो गया। और आई की वैल्यू 5 है, ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये नहीं होगा बिकॉज 5 लेस देन 5 फॉल्स, उसके बाहर आ जाता है, इधर आ जाएगा, बराबर। मतलब ये सपोज एन की वैल्यू 5 है, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड 6 टाइम्स और इट विल बी एग्जीक्यूटेड 5 टाइम्स। जितनी एन की वैल्यू उतने टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं n+1 और इसके लिए क्या लिख रहे हैं n, ऐसे लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सोचना है। अभी लिखो आंसर, लिखो इसका और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखो। क्या आता है हमारा आंसर, n+1+3, ऊपर का 3 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मतलब क्या 2n+4, मतलब क्या 2 इन ब्रैकेट n+2। ओके, कल के लेक्चर में भी एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। अभी लिखो, ये ट्रेस करो, पहले ट्रेस करो कितनी बार एग्जीक्यूट हो जाता है, ये समझने चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? हेलो, 50% समझ में आया? यस okay. यस सर। यस सर। Okay, all of you have to put your roll number in chat box and after that you can leave the meeting. ये लिखो, आपके रोल नंबर चैट बॉक्स में लिखो, आपको डिवालो 1 है और आपका नंबर लिखना है और इसके बाद आप मीटिंग लीव कर सकते हो। सर मैंने न्यू एडमिशन लिया है बट मुझे अभी तक रोल नंबर ही नहीं मिला। तो तेरा नाम क्या है? नेहा थी गई। नेहा, तो लिख सकते हो नेहा। ओके, न्यू एडमिशन। सर चैट डिसेबल्ड है, उसको ऑन करो ना। अरे हाँ,